Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So, today in this video, I will be dealing with the definition of domestic violence. First, कहाँ पर defined है? बताइए मुझे. Oh, I can't hear you people, but you should know. It is defined under the Act of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 के अंदर defined है domestic violence. पहले तो डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2G of this particular act of 2005, it says that domestic violence has the same meaning assigned under section 3. तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के लिए सेक्शन 3 देखना पड़ेगा. People, I will be covering up more sections with respect to this particular act in my later videos. First, इस particular video के अंदर I have covered up the definition of domestic violence. पहले आपको meaning पता होना चाहिए domestic violence होता क्या है. उससे पहले जो ये act है Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, this is the act which is made for the protection of women, which is basically dealing with the victim's right, and it is dealing with the types of violences, etc. You people should know about that. Now, what is domestic violence? अब देखो सेक्शन 3 वो बोलता है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. अब डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है? ट्राई टू फोकस, इट इज वेरी इजी, यू पीपल विल अंडरस्टैंड. See, it clearly, first of all, definition of domestic violence बात करता है certain types of violences के से related. क्या क्या violences है उसके अंदर included. पहला है physical abuse, second is sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse. ये चार तरीके के abuse किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं. How? See, section 3 says that for the purposes of this act, any act, कोई भी ऐसा act, कोई भी omission या फिर commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in the case of these certain 4 points. First, कोई भी ऐसा act करता है अगर respondent, कोई भी omission करता है, कोई भी commission करता है या फिर उसका conduct डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है. कब? अगर फिजिकल अब्यूज जैसा कोई एक्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस है. इफ ही इज नॉट प्रोवाइडिंग economic help, he is not helping his wife in order to provide her money, etc., not providing her shelter, etc., he is omitting to do so. And if he is doing any kind of commission of the act, like if he is doing sexual abuse, and through his conduct, if he is verbally or emotionally abusing the wife or any woman, it is said to be the act of domestic violence. First of all, it is necessary, people, who is respondent. Is respondent is anywhere defined under the act or not? Yes, section 2Q of the domestic this protection of women from domestic violence act 2005 defines the word respondent. Respondent means any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom aggrieved person has sought any relief under the act. So जो आप वर्ड यूज करते हो, यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? एज पर सेक्शन 2Q, रेस्पोंडेंट का मतलब कोई भी एडल्ट मेल पर्सन, ठीक है, जो अग्रीव्ड पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, उसको हम रेस्पोंडेंट कहते हैं. आपकी बात समझ में आई? एनी मेल पर्सन इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज सेड टू बी एज द रेस्पोंडेंट. Dear ones, very much important thing which I would like to tell you people is that whenever you are studying anything, आपको अपनी बेरेक्ट अपने साथ रखो. लॉ की बेरेक्ट आपके पास होनी चाहिए. अभी हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ रहे हैं, उसकी बेरेक्ट अपने पास रखो एंड देन ट्राई टू कोरिलेट. अदरवाइज आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब पता नहीं चलेगा क्लियरली. ऑलराइट, सो कोई भी ऐसा एक्ट, ओमिशन, कमीशन या फिर कंडक्ट
रेस्पोंडेंट का, हम बोलेंगे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस होगा कब? पहला, अगर वो हार्म करता है या फिर इंजरी प्रोवाइड करता है, या फिर इंजरी या फिर इंडेंजर करती है, उसका कोई भी ऐसा एक्ट है which is endangering the health, safety, life, limb or well-being, or mental or physical of the this aggrieved person, it will be said to be as the domestic violence. और वो इंजुरी या फिर हार्म या फिर इंडेंजरिंग ऑफ द हेल्थ, सेव लाइफ, लिम्ब और वेलबींग इस तरीके का है जो क्या क्या इंक्लूड करता है, विच इज इंक्लूडिंग फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, verbal and emotional abuse or economic abuse, then it will be said to be as then that it is the domestic violence done by the respondent. सेकेंड, अगर वो हैरेस करता है या फिर हार्म करता है, इंजुरी या फिर इंडेंजर कर रहा है अग्रीव्ड पर्सन को, ठीक है, ताकि उसको इस तरीके से कोर्स कर रहा है हस्बैंड, वो रेस्पोंडेंट बोलता है कि ब्रिंग, एंड इस तरीके से अब्यूज करता है, इस तरीके से उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, और साथ में उसको क्या डिमांड करता है, अनलॉफुल डिमांड कर रहा है ऑफ डाउरी, और या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी की डिमांड करता है वाइफ से, जो उसकी अग्रीव्ड पर्सन है उससे डिमांड करता है डाउरी की, अनलॉफुल डिमांड हुई डाउरी, राइट, या फिर किसी भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है, which is having monetary value, उस चीज की डिमांड करता है, then that would also be considered an act of domestic violence by the respondent. You people are studying aggrieved person, तो aggrieved person होता कौन है? Aggrieved person means as per law क्या होता है aggrieved person? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बोलता है कि अग्रीव्ड पर्सन मींस एनी विमेन, कोई भी ऐसी विमेन who is in a domestic relationship with the respondent. So any women जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है रेस्पोंडेंट के साथ, उसको हम अग्रीव्ड पर्सन कहते हैं. अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता क्या है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स कोई भी ऐसा रिलेशनशिप which is means a relationship which is between the two person who live or have at any point of time lived together in a share household. अगर वो दोनों एक ही common household में रहे हैं, they have shared the household and the people are living together, whether they are related by consanguinity marriage or through relationship in the nature of marriage, adoption, or family members living together as a joint family. So it is also including somewhere live in relationship also. There are various case laws with respect to that also, उसके ऊपर एक separate video बन सकती है. But domestic relationship means where two person are living together in a and sharing the they are sharing the household together and living together. It is said to be as they people are in a domestic relationship. Two person who they are said to be. So aggrieved person means any person who is or has been in a domestic relationship with the respondent. It is said to be the aggrieved person. तो अगर aggrieved person को जो रेस्पोंडेंट है वो बोलता है अनलॉफुल डिमांड करता है डाउरी की या किसी प्रॉपर्टी की या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड करता है, देन वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा. और क्या करता है वो, उसका ऐसा कंडक्ट है जिसके वो या फिर इन जितने की ए और बी के अंदर जो आपने भी पढ़ा, ए और बी क्लॉज के अंदर पढ़ा, और वहां पर वो अगर थ्रेटन कर अग्रीव्ड पर्सन को इन सब चीजों की डिमांड करता है अपने उस कंडक्ट से, देन इट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक वायलेंस डेफिनेटली फॉर श्योर. ठीक है, या फिर अगर वो मेंटल या फिजिकल हार्म कर रहा है अग्रीव्ड पर्सन को, then it will also be considered as the domestic violence definitely. Physical abuse people, I hope that you know that physical abuse क्या होता है. कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कंडक्ट जो इस नेचर का है, which is causing bodily pain, harm, danger to life, limb or health of the aggrieved person, जो कि क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, assault, criminal intimidation, criminal force इंक्लूड करता है, उसको हम फिजिकल अब्यूज कहते हैं. वहीं पे जब हम सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं तो सेक्सुअल अब्यूज मींस एनी एक्ट, इट मींस दैट कोई भी ऐसा कंडक्ट जो सेक्सुअल नेचर का है, जो अब्यूज कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है और डिग्रेड कर रहा है एक विमेन की डिग्निटी को, उसको हम सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं.
जब हम वर्बल और इमोशनल अब्यूज की बात करें तो वर्बल और इमोशनल अब्यूज के अंदर क्या क्या आ सकता है? सब रेस्पोंडेंट इज इंसल्टिंग, रिडिकुलिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग और कॉलिंग द अग्रीव्ड पर्सन। जब भी हम अग्रीव्ड पर्सन की बात करूंगी तो इट इंक्लूड्स एनी वुमेन। एनी वुमेन के अंदर वाइफ भी इंक्लूडेड हो, डेफिनेटली इंक्लूडेड होती है, राइट? तो एनी लिविंग पार्टनर ऑल्सो। सो अगर वो हस्बैंड, अगर वो रेस्पोंडेंट जो है वर्बल और इमोशनल अब्यूज करता है अग्रीव्ड पर्सन के साथ, स्पेशली विथ रिगार्ड, आप कंसिडर कर जैसे कि यू आर नॉट एबल टू गिव बर्थ थ्रू अ चाइल्ड, or with regard to not having a child or a male child, it will be coming under the verbal and emotional abuse. Repeatedly उसको threaten करता है कि वो physical pain करेगा किसी भी एक person को जिसके साथ aggrieved person is interested, is having any connection. तो ये भी आपका वर्बल इमोशनल अब्यूज के अंदर आता है। और इमोशनल जब हम अब आता है इकोनॉमिक अब्यूज की, एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ। रेस्पोंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हेन दे आर इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, right? You people might be very well aware about that. So if you are depriving or not providing any economical or financial help to the aggrieved person, then the respondent is said to be has committed the offense of domestic violence. So this is basically the meaning of domestic violence. So domestic violence include करता है physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, economic abuse, जो वाइफ को मेंटली, फिजिकली और मेंटली प्रताड़ित करा जा रहा है by the respondent, then that particular act, omission or commission or conduct of the respondent will, that particular act shall constitute the domestic violence. Always remember this, people. Under section 3 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, it has been defined. आपको डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब पता होना चाहिए, फिर अग्रीव्ड पर्सन कौन होता है और रेस्पोंडेंट कौन होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सेक्शन 2Q देखिए, एनी एडल्ट मेल पर्सन, ठीक है। अग्रीव्ड पर्सन देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 2A, इट मींस एनी वुमेन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रेस्पोंडेंट, तो उसको हम डोमेस्टिक अग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट पर्टिकुलर act is dealing with the definition of the domestic violence. I hope you people get to know about the meaning of the domestic violence, right? I hope that you people through this video got to know about the meaning of domestic violence. This is very important to know that what actually domestic violence is. क्या खाली sexual abuse ही domestic violence के अंदर आता है? क्या इकोनॉमिक अब्यूज नहीं आता? क्या वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज नहीं आता डोमेस्टिक वायलेंस पे? सो डियर वन, you should watch this particular video and should know the meaning of domestic violence provided under section 3 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. All right, so if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching this video. Thank you.